Hello guys, myself Chaitanya, and today we'll be starting about learning about projection of solid. Okay, so when I'm concerned with Mumbai University, projection of solids is asked for 21 marks. Okay, so I'll just divide when I'm concerned with projection of solids. Okay, so it is actually asked for 21 marks. I'll just tell you the division of the same. That is, there are some two-stage numerical that is asked for 6 marks, and three stage numerical this is asked for 15 marks. So 15 plus 6, it's 21, and that too out of 60 marks. And when we are concerned with the passing marks of 60, that is 40%, so it's 24. So it's very important. For that, yeah, when you're concerned with the projection of solid, you need to learn some basics about solids. What is solids? Okay, I'll just tell you about solids. Okay, so when you're concerned with the solids, there are four types of solids. Okay, you just need to know what are the points related to the solids or the technical words related to the solids. Okay, so there are three types of solid, that is cylinder, cone, pyramid, and a prism. So these are the four types of solids. When you're concerned with the cylinder it's quite simple. You must have seen a cylinder जिधर ऊपर भी सर्कल रहता है नीचे भी सर्कल रहता है, so that's a cylinder. So your cylinder will be just resembling like this. Okay, when you are concerned with cone, so this is a cone, so this is a cone. And when you are concerned with pyramid, I'll take the example of square pyramid. So I'll take the example of square pyramid. So this is how a square pyramid looks. And when you are concerned with the prism, I'll again take the example of square prism. So this is a square. You will have two squares related to it. So this is square prism. Okay. So in this four types, you just need to know the technical points, aspects of this. Okay. Now they will always focus upon the axis height. So when you are concerned with the solid, the height of the solid is defined by the axis height. Where's the axis? Okay, तो इधर भी सेंटर है, इधर भी सेंटर है, इधर से जो लाइन जा रहा है that is called as axis. Okay, and you observe apex, so this is called as apex in pyramid as well as cone. Okay, तो अपेक्स से जो लाइन पास होता है और सेंटर से जो लाइन पास होता है दैट इज कॉल्ड एक्सिस. अगेन the square center and the apex, again the center to center, this is the axis. Okay, so this is the axis. Again it's the axis, this is the axis. Okay, so you must be known with the axis height. So the axis height, actual height of the solid is defined by the axis. Okay, now second thing to know about the technical points of the solid is nothing but the marks. Okay, so when you are concerned with cylinder and prism, this is asked for 15 marks. Okay, and when you are concerned with cone and pyramid, this is asked for, sorry, my bad, yeah, I'll just rectify the same. Yeah, when you are concerned with cylinder and prism, okay, when you're concerned with cylinder and prism, this is asked for 6 marks. And when you're concerned
with cone and pyramid, the one with apex, this is asked for 15 marks. Okay, so total weightage 15 plus 6 is nothing but 21 marks. Okay, now another technical aspects of the same is quite simple. This is nothing but base diameter. This is base diameter. So base diameter is but natural. It is observed in a cone and a cylinder. So this is the base diameter. Phi is nothing but the diameter, representation of a diameter. Okay, this is nothing but a base edge. When I'm concerned with base edge, in case of square pyramid or a square prism, you will have 4 base edges. In case of pentagonal, you will have 5. In case of hexagonal, you will have 6. Okay, this is nothing but the base corner. Okay, so base corner and base edges are observed in prism and pyramid. Okay, this is called as triangular face. Triangular face. Okay, this is called as rectangular face. Rectangular face. Okay, now the line joining the apex. Now see, this is the apex, and the line joining the apex and the base corner is called as slant edge. I'll just, this is nothing but the slant edge. Okay, because in problem they will just ask the question in a written manner about the axis height, the base diameter, or else the base corner, base edge, or else triangular face is resting on HP or VP. That's the second point, but you must be known with the technical terms of the same. Okay, so what we have now, this when we are concerned with the circle, so सर्कल को एक्चुअली इमेजिनरी 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है या फिर 12 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. तो वैसे ही ये देखना, इधर भी किया. सो दिस, सी ओवर हियर, दिस इज नथिंग बट द एंड प्रोजेक्टर्स. ओके, सो एंड प्रोजेक्टर्स. So when we are concerned with solids, you need to know the technical words, that is nothing but the base diameter, base edge, base corner, rectangular face, triangular face, then a slant edge and projector. Because इसके ऊपर ये टेक्निकल टर्म्स के ऊपर आपको जज करेंगे और आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए. So this is nothing but the basics of solids. So now in this lecture we are only concerned with the 6 marks. 6 marks is nothing but pyramid, prism and a cylinder. Okay, so इसका ट्रू शेप जानना भी जरूरी है आपका. व्हेन यू आर कंसर्न विद अ सिलेंडर, so this is the true shape, a circle. This is the true shape of a cylinder. Second, this is the true shape of a cone. See over here, ये true shape of a cone. Similarly, when you are concerned with a square pyramid, so this is the square pyramid, true shape. And when you are concerned with the true shape of a square prism, so this is the true shape of the square prism. Now true shape is important because when we are dealing with 6 marks, in 6 marks we are actually dealing with two stage numerical, and in 15 marks, in 15 marks you are actually dealing with 3 stages. Okay, so in this lecture will be focused on the 6 marks only. तो 6 marks के लिए क्या करना है, that's very important. Okay, now 6 marks में आपको टेक्निक के संग जाना है. Okay, now as we are known with the technical terms, we'll use the techniques for identify our stages and draw accordingly. Okay, now technique number 1,
Technique one number one is quite simple. Just identify if the solid is on HP, that is horizontal plane, horizontal plane, or else there may be a second case that solid is on VP, that is vertical plane. Vertical plane. There are only two possibilities, two probabilities. एक तो solid on HP रह सकता है या फिर VP रह सकता है, and you are known with this basic part in projection of lines. This is XY line. इसके ऊपर वर्टिकल प्लेन रहता है, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, व्हेन यू आर कंसर्न विद द टू स्टेज, नाउ द फर्स्ट स्टेज स्टार्ट्स विद द ट्रू शेप. मतलब क्या, इफ एट ऑल आपको बोला है सॉलिड ऑन एचपी है, इफ एट ऑल दे हैव सेड दैट सॉलिड इज ऑन एचपी, तो आपका ट्रू शेप will start from here. TS stand for true shape. Okay, for just a glance purpose, it's quite simple. I've shown you the true shape of a cylinder, of a cone, of a pyramid, and a prism. Okay, these are the true shape. So we'll start with the true shape of the respective lamina or else a solid. Then afterwards VP में प्रोजेक्ट होता है फ्रंट व्यू, तो इधर फ्रंट व्यू आ जाएगा on the projections of the true shape. So this completes the first stage. And when you're completed with the first stage, you're having the 2 marks out of 6. Okay, it's quite simple. I'll tell you in the example part, but just for the basic, our techniques are important. So we'll always start with the true shape. Why? When if they have said that solid is on HP, तो आपको true shape HP पे बनाना है. ओके, VP पे हमेशा प्रोजेक्ट होता है फ्रंट व्यू, तो इधर फ्रंट व्यू बनाना है. ओके, देन ओवर हियर सेम front view with second stage condition, okay, and with the help of projection of this and this, you get the top view. Okay, मतलब क्या, आप you are going in zigzag manner, but while going from zigzag manner it's quite important कि आपका ट्रू शेप गलत हो गया तो फ्रंट व्यू भी गलत होगा. एंड इम्पा फ्रंट व्यू को ही आप सेकंड स्टेज का कंडीशन दे रहे हैं, तो फ्रंट व्यू और ट्रू शेप से ये टॉप व्यू आता है, तो आप अटेम्प्ट करके आओगे 6 मार्क्स. बट अगर ट्रू शेप मिलेगा तो इधर प्रोबेबिलिटी सिंपल है, एक तो 0 मिलेगा, नहीं तो 6. ओके, सो दैट्स व्हाई द टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इन केस ऑफ सॉलिड ऑन वीपी, वीपी मतलब ये एक्स वाई के ऊपर रहता है, तो इधर आपका ट्रू शेप आ जाएगा. ओके, एचपी पे प्रोजेक्ट होता है आपका टॉप व्यू, इधर आपका टॉप व्यू आ जाएगा. इधर आप टॉप व्यू को सेकेंड स्टेज का कंडीशन दे दोगे. विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्शन एंड दिस प्रोजेक्शन you will get the front view. Again you are going in a zigzag manner, that is true shape, after that top view, after that top view with second stage condition, and with the help of projection, that is this projection, top view, second stage projection, and the true shape projection, you are getting the front view. These are the two stages. So this is nothing but technique number one. After technique number one, you must be known that your true shape is highly important, because true shape गलत हो गया सर पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रू शेप को ही हम लोग टॉप व्यू या फिर फ्रंट व्यू बनाते हैं प्रोजेक्शन से, और टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को सेकंड स्टेज का कंडीशन देके हम लोग फ्रंट व्यू या फिर रिस्पेक्टिव टॉप व्यू बनाते हैं. ओके, मतलब क्या, एक आग का ट्रू शेप आ गया तो सब उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो ट्रू शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई माय टेक्निक नंबर 2 इज डिपेंडेंट अपॉन ट्रू शेप. ट्रू शेप कि ट्रू शेप आपको कैसे ड्रॉ करना है. ओके,
there are only two possibilities of drawing a true shape. I'll start from ट्रायंगुलर, मतलब क्या, अगर मैंने प्रिज्म लिया तो ट्रायंगुलर प्रिज्म भी रह सकता है, प्रिज्म भी रह सकता है, या फिर पिरामिड भी रह सकता है। सिमिलरली अगर और एक मैं बढ़ा दूं उसमें लाइन, तो इट मे बी अ स्क्वायर प्रिज्म और एल्स पिरामिड, और एल्स यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा करके पेंटागन आता है फॉर 15 मार्क्स। पेंटागोनल प्रिज्म या फिर पिरामिड भी रह सकता है, या फिर द लास्ट वन हेक्सागोनल प्रिज्म या फिर पिरामिड भी हो सकता है, एंड द लास्ट वन कोन या फिर सिलेंडर भी हो सकता है। तो इतने ही आपके व्हाट वी से आने के चांसेस है, ठीक है। विल जस्ट डिस्टिंग्विश दिस पार्ट। या आई एम जस्ट कंप्लीटिंग दिस टेबल। या नाउ मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, ट्रायंगुलर प्रिज्म या फिर पिरामिड, एक तो उसका ट्रू शेप ऐसे रह सकता है, राइट साइड देखना पॉइंट पे, या फिर राइट साइड देखना बेस एज पे। देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज ऑफ ड्रॉइंग द ट्रू शेप ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म और एल्स पिरामिड। ये रह सकता है या फिर ये। इस पे मैंने पॉइंट पे फोकस किया है और इस पे मैंने बेस एज पे फोकस किया है। ओके, इट्स क्वाइट सिंपल। देन स्क्वायर पिरामिड, this is the square pyramid. There are only two possibilities of drawing a square pyramid, that is on the point or else on the base edge. Okay, again when you are concerned with the pentagon, पेंटागन के भी दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो बेस एज बेस पॉइंट पे बनाओ, बेस कॉर्नर पे बनाओ, या फिर बेस एज पे। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है। ओके, सिमिलरली हेक्सागन, हेक्सागन एक तो ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे। देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और कोन, कोन या फिर सिलेंडर का सेम रहता है ट्रू शेप, क्या रहेगा, सर्कल, सर्कल। ओके, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ऐसा कब बनाना है और ऐसे कब बनाना है। इसके लिए आपको कीवर्ड का नॉलेज चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही दे दिया। ओके, सो इट्स क्वाइट सिंपल। ये कब यूज करना है, जब ऐसे मेंशन किया है कि बेस कॉर्नर, resting on one of his base corner or a slant edge. So for this you use this one. Okay, तो आपको सिर्फ देखना है बेस कॉर्नर या फिर slant edge है क्या है, तो यूज दिस। एंड इन केस ऐसे बोला है कि बेस एज और एल्स ट्रायंगुलर फेस और एल्स रेक्टेंगुलर फेस, सो ये अगर टर्म आप देख रहे हैं तो सिंपल है, आपको इस पे बनाना है। ओके, so this is the technique number 2, that is identification of true shape. Okay, I'll just revise it. I've shown you the simple part, that is the weightage of projection of solids, the weightage of projection of solids. Okay, in this part we are only concerned with the basics of the 6 marks, that is two stage. Okay, I've also said you कि cylinder and prism comes for 6 marks, and cone and pyramid this comes for 15 marks. It's quite simple. Okay, in that I've told you what is the technical part of a solid, that is base diameter, base edge, base corner, slant edge,
may it be a triangular face, a rectangular face. This technical part is important. On that our technique number 2 is dependent, so this is important. Okay, I've also shown you the respective true shape of a cylinder, of a of a cone, a pyramid, a square pyramid specifically, and a square prism. Okay, now we are only concerned with the two stage, so I have given the logic of the two stage. If at all your solid is on HP, तो आपका ट्रू शेप HP पे आएगा, VP पे हमेशा फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट होता है. फ्रंट व्यू को ही सेकंड स्टेज का कंडीशन लगा के फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन से टॉप व्यू के प्रोजेक्शन से आता है टॉप व्यू. ओके, फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन एंड ट्रू शेप के प्रोजेक्शन से आता है टॉप व्यू. सिमिलरली ट्रू टॉप व्यू है, ट्रू शेप है, ट्रू शेप किधर है, वीपी पे है, तो बट नेचुरल वो सॉलिड ऑन वीपी रहेगा. ओके, तो ट्रू शेप बना दिया, ट्रू शेप के बाद फ्रंट टॉप व्यू बना दिया, टॉप व्यू को ही सेकंड स्टेज का कंडीशन दे दिया टॉप व्यू के प्रोजेक्शन से, और ट्रू शेप के प्रोजेक्शन से बनता है फ्रंट व्यू. ओके, and the technique number 2 in this, all everything is dependent upon the true shape. That's why the technique number 2 is dependent upon the true shape. So that's the basics of the 6 marks numerical, and it's very important. And next I'll be in next video we will be dealing with some university numericals of 6 marks. Thank you, and thanks for joining.